हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो ट्रेडर्स। सो अभी मैं लाइव ट्रेडिंग आपके सामने कर रहा हूँ। कुछ पोजीशंस हैं जो अभी ओपन है। I'll try to talk in Hindi and English both because there are viewers from South who better prefer English and there are a lot many people out there who prefer Hindi. तो मैं दोनों में बात करूँगा so that I can convey my message and my knowledge to you guys. तो अभी जो पोजीशन मैंने अभी कैरी फॉरवर्ड करा हुआ है दैट इज समवेट अराउंड टेलिंग अस दैट पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रैंगल। तो अगर मैं चार्ट पे बताऊं कैसे ये हो रही है तो आप देखो लॉजिक इसके लिए क्या था। लॉजिक वाज दैट सिंपली दैट देयर वाज अ गैप डाउन फॉर्मेशन। बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन के बाद ये बहुत बड़ा विक बनाया है, इसने बहुत बड़ा विक बनाया है। और इस विक के अगर आप देखें नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल वो भी एक बुलिश कैंडल था। ये इसका जो कैरेक्टर है इसको बुलिश बोलेंगे बिकॉज इसका देखो इसका डाउनफॉल ज़्यादा नहीं आया, राइट। और यहाँ से इमीडिएटली एक इसने कंफर्मेशन दी थी दैट दिस इज गोइंग टू बी अ स्विंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो दिस स्विंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन हेल्प मी दैट 35,000 जो यहाँ पे देखो 35,000 का जो अपना साइकोलॉजिकल लेवल है दैट विल बी रिस्पेक्टेड। So first thing I concluded that. So I was selling 35,000 puts and I was selling 35,500 calls. So ये जो रेंज मैंने सुबह एक अपने एनालिसिस से एक डिड्यूस किया कि भाई इस रेंज में ये मार्केट रह सकता है। तो आई डिड्यूस कि भाई ये रेंज में मार्केट रहना चाहिए। बट जैसे जैसे मैंने टाइम जैसे जैसे चलता चला गया, अभी भी मैं आपका ट्रेड दिखाता हूँ। तो मैंने ये ट्रेड को मूव करा अप। ये 35,000 से मैंने ये मूव कर दिया 35,200। ये फ्यूचर्स का दिखा रहा हूँ तो आप यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू ऑन दी स्पॉट चार्ट। तो स्पॉट पे आप देखो पहले मेरा जो एनालिसिस था दैट वाज 35,000। आई वाज क्वाइट अवे फ्रॉम द मार्केट। 35,000 ऑन द पुट साइड एंड 35,500 ऑन द कॉल साइड। ये था मेरा रेंज। अब जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे रिस्पेक्ट बढ़ता चला गया इसका, ये रेंज का जो रिस्पेक्ट है बढ़ता चला गया जैसे जैसे ये बार बार अपर विक्स को बार बार ये तोड़ रहा था जब, तो मैंने अपना जो रेंज है जो डाउन साइड रेंज है उसको मैंने थोड़ा रिवाइज किया एंड दैट आई पुल्ड इट अप टू 35,200। so this was the range which is currently being worked upon, which I am currently holding। और इसमें बहुत अच्छा डीके आ रहा है मेरे को। I'll just show you here। so somewhat around you can see that I have taken position on both the sides। I have converted into iron condor and that is just for the sake of having some benefits of the margins. Let me also, okay, and let me adjust the screen a little bit। okay, so आप यहाँ पे देखेंगे अगर 35,500 का एक कॉल सेल किया हुआ है और 35,200 का पुट सेल किया हुआ है जो कि मैंने रेंज में आपको बता दिया है। अब ये दोनों को मैंने हेज करा हुआ है जस्ट टू गेन द मार्जिन बेनिफिट। तो दीज आर बाय 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 ऑप्शन बाय हैं जो मार्जिन बेनिफिट को लेने के लिए मैंने उसको हेज करा हुआ है। उसके कोई इतना बड़ा इट्स जस्ट अ कॉस्ट टू माय ट्रेडिंग। तो मैं यही समझ के चलता हूँ कि ये मेरा कॉस्ट है और ये होना ही होना है। तो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू माय ट्रेड्स एंड व्हाट आई एम कैरिंग फॉरवर्ड। अगर आगे जाते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं तो अब 1 बजे के बाद का जो टाइम है बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो 1 बजे के बाद कोई ना कोई मूव आएगा। जिस तरह का मूव आ रहा है, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, लेट्स ओपन दी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हियर। यहाँ पे देखो अभी मैं डेटा का भी बात करूंगा, दोनों बात करूंगा मैं। तो जिस तरह का मूव आ रहा है देखो, जिस तरह का यहाँ पे मूव आया, डाउन आया फिर अप, फिर इसने लोअर लो नहीं बनाया। यू सी हियर इट फॉर्म्ड अ point here, then it formed a lower low, then it formed a lower high,
then it formed a lower, not lower low, it did not went over here to form like this, it did not form this level, it went up from here itself. So that means it negated the possibility of creating a lower low. So when it negated and formed an inconsistency, then that means that it will be sideways for a particular point in time. So for a particular time horizon, it will be sideways. So that's what happened in the market. It was sideways and it stopped making lower lows. Then it made higher high. It was attempting to make higher high. Then again it got challenged. Okay, and again from the point where it took the decision to not make any lower low, it gave a good reaction from there itself. You see, जहां यहीं से रिएक्शन इसने बहुत अच्छा दिया है, और यही वो पॉइंट था जहां पे इसने एक डिसीजन लिया था कि इसके नीचे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, इसके नीचे यहां से ये वाला लो ब्रेक नहीं करेगा, वो यहां पे डिसीजन लिया था. तो these decision points are important for us to make our own position adjustments. तो जब प्राइस यहाँ पे आया and it made this candle here, bullish candle, and then there was a follow up candle, then this was a boom entry for the option buyers. And also it was a warning to the call sellers कि भाई थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट करके चल लो तो अच्छा रहेगा. अब क्या हो रहा है मार्केट में कि यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न्स बना रहे हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे हैं इसमें, लेकिन जो 200 मूविंग एवरेज है दैट इज स्टिल इंटैक्ट. 220 मूविंग एवरेज को तो इसने क्रॉस कर दिया बहुत अच्छे से, इसने टाइम भी स्पेंड किया, बहुत साइडवेज भी रहा. अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है. अब ये कितना ऊपर जाएगा और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? स्टॉप पॉज लेंगे. स्टॉप पॉज एक स्ट्रैटेजी होता है, जैसे कि मैं कॉल साइड को पॉज कर दूंगा थोड़े टाइम के लिए, फिर दोबारा से उसको मैं रिज्यूम करूंगा. तो स्टॉप पॉज स्ट्रैटेजी मैं इसमें करूंगा कि नहीं करूंगा, दैट कैन ओनली हैपन इफ आई एम लाइक कन्विंस्ड नाउ. अब इसका जो बैकग्राउंड है, डेटा का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि डेटा का बैकग्राउंड मैंने कैसे निकाला. तो अगर आप देखो पीसीआर की स्टडी करो, ये देखो पीसीआर सुबह ऐसे सा दिख रहा था, सिर्फ ये चार्ट पे बड़ा सा ये दिख रहा था, बस ये पॉइंट दिख रहा था बड़ा सा. अब पीसीआर, जैसे पीसीआर ने एक स्विंग लिया ना, ये वाला जब पॉइंट यहाँ पे ब्रेक कर दिया ना यहाँ पे, तो मैंने समझ लिया कि मार्केट आज नीचे नहीं जाने वाला है. अगर मतलब साइडवेज रहे दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी, बट मार्केट विल नॉट गो डाउनवर्ड्स. एंड दिस वाज हैपनिंग correspondingly side by side when the P minus C was consistently showing a bearish character. You see here, let me just open on the 15 minutes because बहुत सारा इसमें डेटा है. तो बेरिश यहाँ पे हो ही जा रहा था, ये देखो फ्रॉम 9:30 to 10:15 ये रेड में ही था, ये P minus C का डिफरेंस. तो ये रेड होने के बावजूद मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पे around 10 o'clock, just before the P minus C even had a turnaround, कि यार मार्केट डाउनवर्ड नहीं जाएगा because the PCR is consistently increasing. Now a moment of joy came for the option buyers, the call option buyers over here when there was a bullish crossover. अब जैसे जैसे यहाँ पे आया, कंटेंशन हुई, सीधा बहुत इजीली पुट सेलर हावी हो गए कॉल सेलर पे. अब जब ये पॉसिबिलिटी जब आई तो मार्केट, ये कब आया देखो यहाँ पे, अगर प्राइस हम चेक करेंगे तो दिस केम समवट अराउंड आफ्टर 10:20. अगर प्राइस का पॉसिबिलिटी देखें यहाँ पे, प्राइस में क्या हुआ 10:20 के बाद, देखो क्या हुआ 10:15 10:20. 10:20 के बाद देखो थोड़ा कंटेंशन हुआ, यहाँ पे साइडवेज रहा मार्केट, बट इट डिड नॉट make it clear that it will go down. It only made it clear that it will be sideways or it will go on the upper side. So वही सुबह का जो मोमेंटम होता है वो ज्यादा होता है, और वो मोमेंटम बार बार बाद में कम होने लगता है. अब जैसे हम ये, आपको यहाँ पे तो मोमेंटम मिलेगा नहीं, राइट. इवन डेटा डिसीजन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी फ्लो होता ही नहीं है. लिक्विडिटी फ्लो 12 बजे के बाद होगा, जब यूरोपियन इंडेक्स वगैरह खुल जाएंगे उसके बाद ही आपका लिक्विडिटी आएगा. तो ये देखो 12 बजे के बाद जैसे ही लिक्विडिटी का इनफ्लो आया, इसने रिस्पेक्ट करने कर दिया. और ये लुक एट द काइंड ऑफ द विक्स इट इज फॉर्मिंग ऑन द लोअर साइड. सो लुक एट द विक्स, लुक एट द काइंड ऑफ विक्स.
सो यही चीज़ हमें बताता है कि क्या मार्केट में क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं, कैसे उसको ट्रेड करना है, कैसे अपने माइंडसेट को एक शेप देना है और उसी को साथ में लेके चलना है। तो अभी एक थोड़ा कंफर्मेशन आ रहा है बुल साइड में, हम यहाँ पे ट्रेड की पॉसिबिलिटीज देखते हैं कैसे आएगी। So now I will focus more upon the trades and I'll update you whenever there is a possibility. Okay. So I've given you all the background information, what I had to do and what the day is like. Now we have to just wait and watch what is happening in the Banknifty and what can be done. So if I see a possibility that it will go on to touch and kiss the 200 moving average, then I will take a pause on the call side. I will let the put side slide and I will have some decay on the put side into my kitty. But let's see how it happens. So I have two screens. So another screen I have opened 15-minute chart, analyzing that. So a very good bullish move is the possibility. I'll close my position on the call side whenever I see and expect the market will continue to go on the upside. But I do not want to be a prematured person who will do that. Either I can also shift my strangle and convert it into straddle. So let me also look at the possibility of converting it into a straddle of 35,500. So all I want is consistency in my profit. I do not want any swings in my profit. Whatever DK I have captured, I want it to be stabilized. तो यही मेरा एक टारगेट रहता है कि जो भी प्रॉफिट आ चुका है उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना आए. So if you have any question and queries, you can put upon in the chat box. I'll definitely like to check. So those who are watching me, there is a lag of somewhat around 30 seconds. So you have to convert your analysis and feedbacks accordingly. There is a lag in the telecast. So I can see that the market is not heading higher, but I will expect it to spend a little bit more time around the day's opening range, the first 15 minutes candle, and maybe it will try to spend a little bit more time and take it till 2 o'clock, and after that it will make a decision to do what not to do. So we'll stay put till that time, and whenever the market will come down, I will have it as a possibility of entering into the puts with a better pricing. So maybe I will just shift my puts on the upper side, so from 35,200 to maybe 35,300. I will do that. Let me just check the possibility here. So 35,300 puts are trading at around 333, and that should
save me only a little bit. I'm in fact considering the possibility of converting it into straddle and selling 35,500 puts to have a better consistency and non-variation in my positions. So whatever DK I have captured, I do not want it to be going away, fading away. So let's see what possibility arises finally. That will only happen when my contention on my clarity of thought is there to convert it. Other than that, I would definitely like the market to swing into my range and not do much. I can see a spike in the India VIX. Let's also look at the data, what is happening in the data. So data, there is, and again, you can see that there is a point where the PCR is again taking a hit on the upper side. You can see here, it is just making higher highs. So this is just a shake up. Maybe there is a stop loss hunting which is happening right now, where there is bears are to be trapped. So whatever is the possibility, we'll just play it neutral. We'll have it in our way. So I see a possibility here where I will convert my strangle into straddle, but that I will only do when I have the perfect conviction to do that. So the 200 moving average has been crossed on the 15 minutes time frame, and right now it is giving a good reaction towards it, but it can be a swing, it can be all sort of things, but let's see how the 5 minutes closes. So 5 minutes 15 seconds left for the 5 minutes to close. It's turning out to negate all the wicks it has formed. 5 seconds, and yes, it is a swing on the downside. So how much downside it can go? So let's just assume that how much downside it can go. So if we have to make a logical explanation, then you see here, this was the resistance which was converted into support, and it supported very well. Now again, if there is a swing over here, it cannot go below here. So if it attempts to go below here, then there is some kind of mischief, or there is some kind of change in the behavior, in the pattern, in the fundamental of the market, and which we have to look out कि क्या हो रहा है market में, क्या होने हो सकता है ज़्यादातर, right? So I can see a spike in the puts, and yeah, there is a spike in the unusual spike in the puts, but there is no corresponding decline on the call side. So something is cooking up right now. We'll wait and see. So yes, there is a saying that whenever you try to make something happen, so
not many obstacles will be there. So this is a kind for the bulls. तो ये एक ऑब्स्टेकल है बुल्स के लिए, बट यू कैन सी दैट 200 मूविंग एवरेज जो 15 मिनट्स ने क्रॉस करा हुआ है, उसको भी ये एक तरह से थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है, थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है. अब यहाँ पे ये अगर हम देखें कि ये ऊपर साइड में बहुत वीकर रेजिस्टेंस बना रहा है, एक ही प्राइस पॉइंट पे दो दो विक्स बन रहे हैं, तो ये वीकर रेजिस्टेंस का एक निशानी है. Nevertheless, as I told you that if there is a swing possibility, तो वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो देखना पड़ेगा. तो maybe it's time for me to convert it into strangle. I'm just weighing in the possibility there. Yes. Okay, okay, I've converted into straddle now, and I can expect that the market should head higher from here, because there was an attempt to take the market on the downside, but it failed. So it should go on the upper side now. As I'm using the fires go charting to punch in the data, punch in the orders. So I'll reduce the call side position because of the margins restrictions. So let me just do that. This is a very convenient way to trade options, as I found. This is not at all a recommendation, so please do not budge. So I've scaled down my positions by one lot due to margin restrictions, and currently we're doing quite well. Yes, all I need is the bullish momentum now to kick in place, and my straddle to have maximum amount of decay. And there is a sense of safety net when you do straddle, because you're not taking a resolute view that the market should go to 35,500. You're just making an assumption that the probability of market going to 35,500 is a little bit more at this point in time, but I do not negate the probability of it not going to 35,500. So that's why there is a sense to do option selling, where you have both these sides being traded, and which helps you to stay longer into the trade, to have lesser amount of psychological impact onto yourself, and let the winning trades run. So these are all merits of the option selling. So that's why you can see that again we are coming back to 25,000 profit, and that is happening only and only because of the price action analysis which I told you. So look at the beauty of price action which I told you. So if it was a case that it was turning out to be bearish, it will make a down move below this, and it did attempt to make a support. See, every time it is breaking a resistance, it is coming back to take as a support here. So it did that. In fact, it went a little bit more lower, and it was almost proving it that this is a bearish swing. It almost proved that, but the next follow-up candle was not red in color. It was green. It was inside bar, then it broke on the upper side. Now it is heading higher and higher. So this is what we say and talk about the price action. The price action is all about opening your eyes and looking what is happening exactly, and do not negate the possibility, the factuality
ऑफ द प्राइस एक्शन। जो हो रहा है मार्केट में उसके सारे पैरामीटर्स को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर लेके चलो। अगर आप वो फैक्टर्स को नहीं लोगे, आप एक बायस डिसीजन लोगे, आपके एक प्री कंसेप्शंस रहेंगे हर डिसीजन में, तो वो एक रैशनैलिटी नहीं आएगी मार्केट में। सो मार्केट इज इरैशनल, but you have to become rational in your decision making. So you can see that there is a spike all the way. So I did not negate the possibility that it might not go, but there is a higher probability of it going to 35,500. So again, the attempt to go on the upper side is getting negated here. You can see, look at the wick formation on the put side. तो क्या हो रहा है मार्केट में, शेकअप्स चल रहे हैं। लेट्स लुक एट द प्राइस। ओके, let's look at the data here. So data is bullish 30, and this is also quite turned out to be bullish, so nothing to worry. But let's look at the PE minus C, PE and versus OI. This is OI versus price, and here we can see the call side is consistently coming to the red line, green line, which was the average true price, and from there on it is taking a support and not coming back and making higher and higher. Now this put side may come back to the average true price and then spend its time, rest of the time, over there itself, but it is turning out to be around 130. So we can have some kind of action on both the sides, and there can be traps set in place, so be vigilant about it. So there is a failed attempt. So if there is a failed attempt, definitely I will try to manage it accordingly. Whether this failed attempt is having any prudency or not, that is a bigger question here. Market tried to go on the upper side, but it failed. But will it continue its momentum on the downside? So I can see some auctioning process getting filled, and now there is a movement on the downside. This is proving to be quite scary, but we have to make the best of it. Let's see. Again, when there was a downfall move, there was a bearish candle. There is still a wait for a follow-up candle on the downside. So एक follow-up candle अगर आता है downside के लिए, then it is a different scenario. So all sort of traps are there, but stay vigilant, stay put. 2 minutes left for the 5 minutes candle to close. That will prove whether there is a follow-up on the bearish side or not.
It seems to be a dip on the downside, but let's see how it happens. 1 minute to go for the 5 minutes candle to close, and this will prove us that whether there is a true intention for the bears to take the market on the downside or not, and whether the bulls are giving up or not. This seems to be the case. 50 seconds left. Thirty seconds to go. Nothing as sought. There is a spike on the put side premium. Correspondingly, there is not much decline on the call side. So even though the VIX is cooling off, let's look at the P minus C. P minus C data is turning bullish, and there is not much of a change here. Yeah. So the color of the candle of the next 5 minutes was not red in color, and thus there was not a follow-up. But anything can happen from here on because the market looks a little bit peculiar and non-understandable. So if it seems to me that the market, I cannot comprehend the market anymore, I will take an exit. So flux of liquidity will be there after 1 o'clock, and especially after 2 o'clock there can be all kind of all kind of move. So yes, it is inching upward, and there was a trap for the bulls on the upper side. Then the market attempted to go on the downside, then it was ready to trap the bears also, so they trapped both the players. Now it is at a decision making point that now whatever it does, it will define its trend. So look at the chart here. Let me just show you here. Look at the chart here. So this was the point where it trapped the bulls here. Okay, they almost trapped the bulls, that the market was going up and suddenly it was not going up. To trap the bulls here, and then it also trapped the bears, that when the bears saw this candle and then they saw that the follow-up candle is also breaking the previous candle's low, they entered here. Then there was a trap. So a trap was set in place over here. This was the web. Now if it clears this web and make an upside move, it will be having more prudency. So whenever there is a move which has happened after there was a shakeout, after there was a contention, after there was a tug of war, after there was all kind of things which trapped both the sides of the market, then there is much prudency for it to keep on to the behavior whatever side it decides from this point, from this box. Whatever thing it decides from this box, it will be kept upon. It will be like a fiat money, right? So still much of it is left. So all we need is just for it to break the wicks and break the day high, break the high of this candle, this particular candle, which led to shakeout. So let's see how it happens. So look, you can see on the OI change, lot many put writing is being quite active here, and
35,500 put writers are quite safe. 35,200 in fact also started to gain, as I also decided upon it. And 35,500 call writers are active, but the put writers are also getting momentum here. So if I just see here 35,500 calls and puts here, and I'll show you how much was the put writing on the 35,500. Let me show you here. So put writing was not that much, you can see here. Sorry. Okay, the put writing was not that much. Let me take a marker. Yeah, you can see the put writing was sluggish on 35,500. It was not higher, but after 12 o'clock it is proving to take some lead here, and the call writers are getting sluggish here. You can see that 35,500. No, this one is another one. Let me just open the clear chart of 35,500. All sort of movement is happening. 35,500 is a little bit sluggish. You can see here it's sluggish in nature, and the put writers are more active. So it tells us to be a little bit calm, and I have exited the put side here because I could not sense market heading higher. So there is a stop pause happening with my strategy here. Let's see how much it can benefit us. So I paused my put side. Let's see how much gain we can tap here. Need a spike on the downside now for the puts to spike, and I can capture some of the gamma benefits. Let's see if it happens.
So I've done a ratio spread now. A little bit more of a slippage here. But this was a decent attempt where I can sense that the bulls got trapped and there can be a good reaction on the downside, but it is not translating. Nevertheless, I attempted. Now the problem is that the wick formation has flipped now. The wicks formation is now happening on the upper side now. Previously it was happening on the downside. So it is telling us a sense of bearishness, but things are not happening as easy. All sort of movements are there.
So I have taken a stop pause now on the call side. I have taken a pause on the call side and letting the puts slide. Let's see how much DK we can capture, how much gamma benefit we can capture. Nine. So decent amount of DK capturing on the call side. Stabilize the position again back to 22,000. So यही एक अपना टारगेट रहता है कि पोजीशंस का जो ज़्यादा वेरिएशन है वो कम से कम हो जाए. तो अभी एक चीज़ हम डिड्यूस कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है 24-25,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, राइट. जब आप देखते हो कि आपका पोजीशन एक लेवल पे जा जाके बार बार हिट हो रहा है, वापस आ रहा है, दैट मीन्स देर इज अ लिमिटेशन इन योर पोजीशन. तो आपका पोजीशन का भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है. अगर ये नहीं जा रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है और आप बार बार उसको ट्राई कर रहे हो, ब्रेक करे ब्रेक करे ब्रेक करे, नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये नहीं, ये ऐसे ही रहेगा. इसको आपको या तो कुछ अलग डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो सीधा बोरिया बिस्तर बांधो और बंद करो, बिकॉज दैट वाज द profit, maximum amount of profit which was facing resistance time and again, and maybe in one big trade ये सारा प्रॉफिट खत्म हो जाए. तो इसलिए यू हैव टू बी प्रूडेंट कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ पे पोजीशंस का रेजिस्टेंस आ रहा है, उसका भी एक माइंडसेट में बना के रखना चाहिए. तो guys, if you have any question, please comment in the chat box, or if you have any feedback, and if you like the way in which I'm taking these live trades, and if you want me to continue doing that, so let me know how is it and what changes do you want and what things do you want to be covered.
Okay guys, you can see that the market is attempting, तो जब भी एक अपसाइड मूव आता है वो एक अननोटिस फैशन में आएगा। अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट खोलेगा, लेट मी जस्ट शो यू हियर, ये देखो 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर इसमें आप एक चीज देखो ना, एक चीज जो कॉमन है, ये विक्स देखो, जब भी विक्स फॉर्म में हो रही है ये मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, नीचे जाया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया। और ऊपर वाले कैंडल्स के विक्स देखो, ये देखो, ये लंबे लंबे विक्स बने हैं, ये लंबे लंबे विक्स जब भी बने हैं ये नेगेट हो गए हैं, राइट। और नीचे वाले जो विक्स हैं ये एक बार तो नेगेट हुआ है, लेकिन ये वाले विक्स को नेगेट नहीं हुआ है। ये वाले विक्स ज्यादा लंबे थे, ये वाले विक्स ज्यादा लंबे थे, ये पूरी तरह नेगेट हो गया। तो फर्स्ट अगर आप कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल का जो विक्स था वो पूरे दिन आज नेगेट हुआ है, और इस ये अब बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है डेज हाई पे। जब ये टाइम स्पेंड करता है, इट्स जस्ट बीइंग साइडवेज एंड स्पेंडिंग टाइम, दैट मींस इट इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड टू दिस प्राइस लेवल। जैसी एक प्राइस लेवल, जैसे बोलते हैं ना नई चीज है बहुत टाइम लगेगा यार सीखने में, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट के लिए एक नया प्राइस लेवल पे टाइम लगता है उसको नॉर्मलाइज होने में। जैसे ही वो प्राइस लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, जैसे ही वो प्राइस लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है, उसके बाद एक कॉन्फिडेंट मूव आता है कि भाई अब तो सीख लिया है ये चीज, अब मेरे को जाने दो ऊपर। तो वही चीज, सेम थिंग विल हैपन हियर। द प्राइस इज टेकिंग टाइम टू गेट नॉर्मलाइज टू इट्स लेवल एंड इट विल सून मेक अ डिसीजन। तो अभी मैंने पोजीशंस पे क्या किया, देखो पोजीशंस में मैं बार बार चेंज करता रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि भाई एक ट्रेड ले लिया और पूरा दिन उसको देखा नहीं चेंज किया, मार्केट के अकॉर्डिंग मेरे को चेंज करना ही करना होता है। दैट इज व्हाट माय ट्रेडिंग स्टाइल इज, एंड दैट हेल्प्स मी हैव अ कॉन्फिडेंस। एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू क्या किया मैंने, अभी बता। तो देखो अभी ट्रेड्स देखो मेरे 34,000 ट्रेड, छोड़ो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, शो यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। 35,400 का पी अब सेल कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया था, 35,200 का पी सेल कर रहा था और 35,500 का कॉल सेल कर रहा था मैं। ये एक स्ट्रैंगल बनाया था। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको मैंने स्ट्रैडल बना दिया, इसको भी मैंने 35,500 कर दिया, तो स्ट्रैडल बना दिया। अब मार्केट ने थोड़ा बहुत ट्रैप किया मेरे को, तो मेरा इट फोर्स्ड मी टू चेंज माय डिसीजन। मैंने दोबारा से एक स्ट्रैंगल ही बनाया, बट इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्ट्रैडल इन नेचर, बिकॉज बहुत ही क्लोज ले गया मैं उसको 35,500 के आसपास, राइट। तो वहां पे क्लोज ले जाने के बाद ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रैडल का बेनिफिट देगा, और साथ में साथ एक जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो स्ट्रैंगल का जो बेनिफिट है, वो भी ये मेरे को देगा। तो रिस्क मैनेज करने के लिए मैंने स्ट्रैडल से दोबारा स्ट्रैंगल बनाया। मॉर्निंग में मैं 35,500 सेल कर रहा था ऑन द कॉल साइड, एंड 35,000 मैं सेल कर रहा था पुट साइड में। ये मेरा था। फिर मैंने मूव करके इसको ले गया 35,200 पे पुट साइड। फिर कॉल साइड वैसे ही था, कॉल साइड को मैंने आज छेड़ा ही नहीं है। फिर पुट को मैं ऊपर ऊपर एडजस्ट करता चला गया, जैसे जैसे मार्केट ने मेरे को बेरिश कैरेक्टर बुलिश कैरेक्टर देता गया, वैसे वैसे मैं उसको ऊपर इंच करता रह गया। तो अभी मेरा जो प्रॉफिट का रेजिस्टेंस जो आ रहा है 24,000 25,000, इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं जा रहा है। तो ये कीपिंग इन माइंड दैट आई कैनॉट लेट माई प्रॉफिट टू स्लाइड बिलो 20,000 एटलीस्ट, बिकॉज दैट इज द मिनिमम आई शुड टेक अवे टुडे। और आई एम जस्ट वेटिंग कि एक थोड़ा सा अप स्पाइक आ जाए अपसाइड में, और वहां पे मैं एक डिसीजन लूँ और एग्जिट करूँ मार्केट से। और एग्जिट का क्या नेचर रहेगा, एग्जिट का नेचर ऐसा रहेगा, तो मान लो कि ये जो अभी पॉसिबिलिटी जो चल रही है ना कि बुल साइड पे मार्केट ज्यादा बिहेव कर सकता है, तो उसका मैं बताता हूँ क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। आई होप द स्क्रीन इज क्लियर, ओके। तो कैसे पॉसिबिलिटी रहेगी, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। तो ये देख, ये कॉल साइड है मेरा, ये पुट साइड है, ये दोनों पोजीशंस अभी चल रहे हैं हमारे। अब पुट साइड को स्लाइड होना है, पुट साइड को स्लाइड कहां तक होगा, पुट साइड यहां से इसके नीचे आएगा, ठीक है। जब पुट साइड इसके नीचे आएगा, यहां पे डिप मारेगा,
तो यहाँ पे टाइम स्पेंड मे भी कर सकता है, मे भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी कितना फास्ट होता है। वहीं कॉल साइड पे अगर देखो तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, अराउंड 330 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा, 330 के ऊपर, और मैक्सिमम 335 ले लो। यहाँ से मेरे को एक मतलब समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब एकदम कॉल वाला मूव एक पकड़ चुका है, और यहाँ से अगर ये ऐसे ऐसे मूव करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, अपसाइड मूव ऐसे ये दे सकता है, वैसे ये स्लाइड होने लगेगा और ये अपसाइड मूव होने लगेगा। अब इन दोनों का अगर तुम कंजेक्चर देखो ना, मेरे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जब ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अराउंड 350 330 340 समवेट अराउंड दोज लेवल्स ट्रेड करेंगे। तो वो कब होता है, कैसे होता है, वो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन हमेशा से बना रहता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। बट आई एम क्वाइट रेजोल्यूट कि जब ये 335 का ऊपर का लेवल ये जब ब्रेक करना चालू करेगा, तब मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दूंगा, मैं अपना स्क्वायर ऑफ चालू कर दूंगा, ठीक है। So keeping the analysis intact, as I said, what is to be done. Let me take this as stop loss here. We'll buy, we'll half a position or a little bit more than that. And यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने कॉल साइड पे। पुट साइड का मैं अभी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, कॉल साइड पे मेरा ज़्यादा थोड़ा बायसनेस है आज। हमेशा एक व्यू रहता है कोई भी ट्रेडर का कि भाई आज मार्केट कहाँ जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो दैट मीन्स कि मतलब नहीं हो सकता यार, फिर एक थोड़ा बहुत व्यू लेके चलना पड़ता है, और उसका भी रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करके रखोगे कि भाई इतना देना है इतना लेना है, अगर उसका रेशियो आप मेंटेन करके रखोगे तो यू विल बी बेटर in the longer time. So guys, if you have any queries, please comment in the chat box. I will definitely like to cater your queries, and if you like these kind of videos, these live sessions, and if you want me to conduct more of these, and if you want any other topics to be covered, please let me know. Let me know your feedbacks. It will definitely help me out. It's going to be 2 o'clock. I can see and sense some spike on the call side. Yes, bring it up. We need a spike on the call side and heavy spike. It's already 2 o'clock. Somewhat around 30 seconds left. So we need a spike on the call side. Bring it up. I will also help the call buyers because I'm placing my stop losses now on the call side and try to exit my positions here on. So I will also try to exit my positions from here on.
Yes, there is a spike now. There is a spike. I'm ready with my positions to be closed. And we can also see that again the resistance of 25,000 in my profit is getting checked again and again. I really want it to break now somehow because it's getting a little bit boring here. Nevertheless, boring is better than losing money because हमारा एक मोटिव जो है मार्केट में आने का इज जस्ट मेकिंग मनी, राइट? सो वो मोटिव को लेके चलना है. अगेन ये बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है. जो करंट कैंडल जो बन रहा है, एक छोटा सा स्प्रिंग चाहिए होता है, छोटा सा पुल बैक चाहिए होता है बड़ा सा मैराथन चलने के लिए. तो एक पुल बैक ही है एक तरह का जो अभी देख रहे हो आप. कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है वो बहुत ही बुलिश बना है, बहुत ही परफेक्टली बुलिश बना है. अब ऑल इट नीड इज कि प्रीवियस कैंडल का हाई को तोड़ते हुए ये ऊपर की तरफ जाते चला जाए और जो हमारा डे का जो हाई है विच इज इन द फ्यूचर्स चार्ट अराउंड 35,495 उसको ये ब्रेक करे. थोड़ा सा डीके यहाँ पे आ रहा है, 1.3% हो गया है विक्स. थोड़ा सा डाउनफॉल आया है वहाँ पे. बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है सब चीज़, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है ऑप्शन सेलर्स के लिए. ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, वो बहुत बार बार एंट्री ले रहे हैं, बार बार ट्रैप हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा अभी ऑप्शन बायर्स के लिए. Come on, give us a spike on the upper side. Let us also read some of the data here. So if you talk about the PCR is quite मतलब वो एक तरह के हाई में पहाड़ पे जाके बैठ गया है, वहां से मूव नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है. पीसीआर कॉल का राइटिंग इतना ज़्यादा नहीं अच्छा है, पुट राइटर्स बहुत अच्छा है, रेड लाइन जो देख रहे हो आप. और पी माइनस सी का क्या कहना, बहुत ही 40 लैक्स के आसपास इसका पी माइनस सी ओ चेंज का जो ट्रेंड है बहुत अच्छे से यहाँ पे जा रहा है, बुलिश है, पूरा पूरा बुलिश है. तो हर चीज़ यहाँ पे बुलिश है. ओनली थिंग इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्राइस एक्शन. और प्राइस एक्शन की अगर बात करूँ मैं, तो जो विक्स फॉर्मेशन जो हो रहे हैं वो बहुत अच्छा एक मोमेंटम दे रहे हैं ऑन द अपर साइड. और ये बस दो भी बच गया है, सब चीज़ अब अलाइन हो रही हैं. डेटा भी अलाइन हो रहा है, प्राइस एक्शन भी अलाइन हो रहा है, टाइमिंग भी अलाइन हो रही है. तो बस अब एक्शन की देरी है, एक्शन एक अपर साइड पे आ जाए और वहां से हम थोड़ा इसको कैप्चर कर सकें. लेट्स सी. सो द लास्ट 7 to 8 minutes ऑफ द 15 minutes कैंडल आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो अभी जो भी एक्शन हो रहा है इट्स जस्ट पासिंग इट्स टाइम. और अभी 11 मिनट्स हो गए हैं, 11 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द 15 minutes कैंडल टू क्लोज. जैसे ये 7-8 मिनट्स रह जाएंगे कैंडल क्लोज होने में, तब एक एक्शन, एक रिवर्सल, एक बहुत अच्छा ट्रू नेचर निकल के आता है ट्रेंड का. तो यू कैन ऑल्सो डू, आप 15 मिनट्स का चार्ट लगा लो. लेट मी शो यू हियर. 15 मिनट्स का चार्ट लगा लो. ये देखो जैसे जैसे विक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, अब ये जैसी जैसी ये थोड़ा सा जब 8 मिनट्स रह जाएगा, 7 मिनट्स रह जाएगा, ये एकदम से देखना बहुत शार्प मूव देगा ऑन द अपर साइड. अगर इसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, ये 10 मिनट्स के नीचे जब ये प्राइस जाएगा, टाइम जाएगा, तभी ये देना लग जाएगा. तो वट एवर इज द केस, it will give us some kind of movement, some kind of action in the last 7 to 8 minutes of the candle. So वो देखते हैं कैसे यहाँ पे होता है.
बिकॉज यू कैन सी एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है यहाँ पे, और अभी थोड़ा मोमेंटम आया है। लेट्स सी ये कितना मोमेंटम आता है, कैसे यहाँ पे वर्क करता है। सो एज ए सेड लास्ट 7 मिनट्स में कॉशन रहना। देखो कैसे लास्ट 7 मिनट्स का, देखो लास्ट 7 मिनट्स पे क्या एक्शन आ रहा है। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस यू कैन ईमेल मी। प्राइस एक्शन स्टडी कैसे कर सकते हैं। अभी मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे ही अप साइड मूव करेगा तो कॉल साइड शिफ्ट कर दूंगा मैं 35,500 से 35,800 पे। तो अभी थोड़ा रेशो स्प्रेड भी चल रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है पोजीशंस में। ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग रहेगा ये आज का दिन। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए होंगे वो लोग, और कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में बिकॉज एवरी अपसाइड मूव इज गेटिंग किक्ड आउट। Nevertheless, we have to try, we have to take whatever data is there into our account, and we have to just trade all those data.
सो गाइस यू कैन सी दैट इट इज़ नॉट ईजी कि अगर एक चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो वो एकदम फुर से हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो भी हमारा एनालिसिस का उसको कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी 15 मिनट्स का कैंडल भी क्लोज होने वाला है, 5 सेकंड्स रह गए हैं। तो देखो कितना ब्यूटीफुली इसने बनाया है, यहाँ पे एक जो बुलिशनेस बना रहा है बार बार, ये अपर साइड पे टाइम बहुत स्पेंड कर रहा है। इनफैक्ट इतना टाइम मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 2 o'clock भी हो गया है, 2:30 के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है आज के टीम में। तो ये चीज़ आप मान के चलो, बिकॉज डेटा का भी जो आप मूवमेंट है थोड़ा सिग्निफिकेंट है, तो कुछ ना कुछ किटी में ज़रूर है आज। ऑल वी नीड इज जस्ट पेशेंस। अभी इतने सारे ऑप्शन बायर्स की बैंड बज गई होगी, बिकॉज वो लोग बार बार एंट्री ले रहे हैं, बार बार एग्जॉस्ट हो रहे हैं। देखो बार बार एंट्री ले रहे हैं अपसाइड पे, बार बार ये ऊपर से विक्स आई जा रहे हैं, उनके सारे पोजीशंस को तबाह कर रहे हैं। तो ऑप्शन बायर्स में अभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता ना इस पोजीशंस को लेके। ऑप्शन सेलर्स देखो आराम से, मेरा जो 25,000 का जो प्रॉफिट था, मैंने जब ये लाइव चैनल लाइव स्टार्ट किया सेशन को 1 o'clock पे, तो वो वहीं पे है अभी, वहीं वहीं पे मेरे को, मैं देखता भी नहीं उसको, छोड़ देता हूँ। बिकॉज मेरे को पता है कि ऑप्शन सेलिंग में ये इसका पोजीशंस का जो जो आ जाता है पोजीशंस के अंदर, वो जल्दी जाता नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज इंस्पायर यू गाइज कि ऑप्शन सेलर बनो। और ऑप्शन बाइंग अगर करना ही है तो बहुत ही कम कैपिटल से करो, जो आपको अफेक्ट ना करें, और मेजॉरिटी ऑफ योर चंक कीप इट इन ऑप्शन सेलिंग। So again, I can sense a attempt. Yes, will it break my stop loss on the upside on the call side? Will it do that? I'm still waiting, because if it does that, it will convert it to a quasi stop loss, and I will have a ratio spread of 35,800. And I've already converted 50% of my position on the call side to 35,800, and it will give me another chance to do that. A very, very non-variation kind of position I have. The profits are quite flat. It is not going anywhere. But if it will try to make a jump, it will definitely do a jump on the upper side. अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा। कॉल्स का प्रीमियम देख लेते हैं एक बार। So this is proving to be a bad candle here. So पुट साइड में एक बहुत अच्छा स्पाइक आ गया है। ये इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट कि इफ इट इज कमिंग, वेदर इट इज coming to stay there, sustain there, and give a follow-up candle on that bearish side or not, or whether it is coming just to trap the bears and also to hit the stop losses of the bulls. So we have to be vigilant कि क्या इंटेंशन है करंट कैंडल का।
So I have to scare off. There was some kind of shake up, and my stop losses were getting hit on both the sides. So I have to make reconciliation with my positions here. So I've taken this as my profit of 11,000, which is 50% of what I was at. So this is a kind of a challenge to me now, that if I attempt to enter into any trades, it may not be as good as it was. So probably now the only thing left for us is to wait and watch. And because this particular candle, you see this 15 minutes candle, it has changed everything for the market. It has taken a stop losses on the downside. Now if it breaks and tries to move upside, and if it breaks this high of this candle here and moves on the upper side, then only there is a possibility of a trend. Otherwise this is proving to be a just a trap day and a sideways day. So what all possibilities are there? Let's just wait and watch now. Nothing much is left for us to do. So in the scenario of a wait and watch, what can happen is I'll look to sell the puts on the upper side, 35,500 puts. I can enter into these, and these are to be hedged. So only this trade is left for me. Other than that, there was quite a stop loss hunting here which happened and trapped me. So this can happen to anyone, but all you have to ensure is that you have to make your position into positive territory and do not make it into negative, because you have to take something from the market, right? So let's see what has happened to my trades. I'm just analyzing. 282, 205. Probably if there will be any trade now, it should be only after 3 o'clock. Now anything is just a trap and just a shakeups. So as you can see that there was an upside move from a trap. It is not getting sustained. So nothing is getting sustained on both the sides, even though the volume was quite significant in the previous candle. It was not sustaining the upper side. So if there is a possibility of me selling the calls, I am setting it to 35,500. Yep. Let's wait and watch now.
Alright guys, so there seems to be some action now. As I said that there's a wait and watch strategy now, and to see what is happening. So if I see on the data front, nothing has happened. It's still bullish. Price action is turning out to be bearish at the moment, but see what we can do, whether we can carry forward any trades for tomorrow. So VIX is up at around 1.7 percentage. Let me look at the premiums on the option chain of 35,000 puts are trading 228, 168, 34,800. 35,000 put I should be looking to sell, and on the call side I am looking to sell somewhat around 35,700. So this can be the range for me which I can carry forward. So let's just try and fix it over here. 700 on the call side and 35,000 on the put side. So these are the hedges, and let me enter into this trade. So I've entered into the put side first, and there seems to be some movement there. Yes. Let me enter one more. So even you saw that the price action was turning out and trying to trap, I did enter on the put side here. Okay. So we entered at around somewhere 214, 223. Now on the upper side, I will sell 35,700 calls. So I'm waiting for some kind of decay on the put side so that I can have a good amount of profit space which I can carry forward. So let's just see if there is some possibility for me to get into that. So as you saw that my profit, which was hovering around 25,000, we did face a resistance of around those levels, and it definitely made become half, and from there on now it's being picked up. Now it is being picked up at a time when I decide to trade, and when it's not when the time when the market is throwing up the possibility to trade and I'm just jumping into every single of them. I have to wait patiently. I have to know whether there is an edge for me or not at any point where I enter. So, so here I felt that there is an edge. That's why I'm entering. Let's open Bank Nifty here on the chart here. So Bank Nifty is heading higher. Let's open 15 minutes. There is some inconsistency in the data here. Let's open 1 minute only. There is a fall in the VIX. VIX is getting hammered, and this is a perfect time for the bulls to take up the market. Whether they be able to do that. Let's also analyze the price of 35,700, which we are intending to sell on the call side. So this is at around 231. Good enough space.
So it has become come out to be a quite challenging one, and both the sides are getting trapped, and that's what also pushed me to close my position. In fact, I converted my position again into strangle, and again I'm looking to sell 35,000 puts here if there is a spike on the downside. There seems to be a good amount of spike happening. So this will negate all the bulls which has happened in the morning. So this is happening right now. A quite challenging one, and you can see that even though it was a challenging one, I am converting it into non-directional as and when I feel comfortable, and that's how we are able to capture some of the decays and able to retain the profits which we have already made. I'll be carrying forward this, hopefully this 700 points range, and the VIX is also not spiked because the VIX went up till I guess 3% up, and then it become half, so that means the VIX has cooled off. I'm expecting the similar line of trend tomorrow also on the VIX. So if we are to calculate how much premium is there, we can also over and over here in the payoff chart and see what is happening. So this is the payoff chart. So if the market expires within the range, then we should be able to get somewhat around 2 lakh 88,000 88,036 rupees. Let me also calculate it manually. So how does I do it? That I take the premiums 256 plus 195 minus 33 minus 16. These are the hedges into 450, around 1,80,000. So 1,80,000 should be the outcome. Here it's showing something else. Let me just, yeah, maybe because of this. Yeah, now it is showing correct. 1,90,000 something should be the profit on the expiry. So even if we get around 80,000, 90,000, half of it, it should be quite worth. So you see, guys, there was challenge being posed to me. How I managed is that I kept on having a stop pause kind of strategy on both the sides. I was not hinged, even though, since the beginning of this video, I was just telling you the market is bullish, 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 bullish. I was just telling you that. But did you notice that even though the market and all the parameters were bullish, I did change my view because I have to be in sync of the price action. I cannot just rely upon the fact and close my eyes that this is just getting bullish and bullish. Look at the P minus E. It's getting bullish and bullish. Yes, it is bullish since the morning. You can see how much bullish. Just somewhat around 115 points. But when I'm talking about at a point in time, then you have to be prudent. You have to be improvising your analysis with the current trends, current facts. So this is what you can see. Even though I've made it into non-directional, still I'm getting now the again profit is going up from 11,000 to 14,000. So this is kind of reward which the market gives me. I'm not chasing the market for the profit each time. I'm just I'm just doing what I should be doing at a point in time. तो आपको बस वही करना है जो ये एक्सरसाइज को बार बार करना है, कैसे करना है, बस ये रिपीट करना है एक्सरसाइज. Guys, if you like this video, do hit the like button and also please share amongst your peer. And I'm sure there must be many good content coming up because if you motivate me,
Definitely, I'll bring up some of the contents presentable to you on the YouTube. Good amount of decay happening. Cherry.
So guys, you can see that the profits have come back. There was some bit of scalping on the option selling which I do, and that has captured me somewhat good amount of points here. There was some kind of mistake in the order placement which costed us around maybe 2-3 thousand. Yeah, yeah, there was a option, there was an open order which costed us somewhat yeah, costed it somewhat around 4,000. So that was a blunder which happened there. Nevertheless, market now receiving the momentum on the upside, and we are quite comfortable with our range now. So even if I talk about right now, how much 1,80,000 was the previous. This is now currently if we talk about 132 plus 204 minus 18 minus 25 into 450, around 1,76,000 is still out there to be eaten. Guys, I hope you liked the video because there are a lot many learning into this live session. I could not imagine that there were so many swings and the way I manage my position. And these are the takeaways which you should be taking away. That how do I manage my trades? So I hope there are a lot many learnings out of this video. And I will be making this video, edit it and make it short. Maybe you can resume, come back later and watch it fully. What all actions happened.
हेलो। हेलो। हाँ जी। मुझे चिंतन बात कर इसको सर। कहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, अभी सर अभी रिज्यूम नहीं करना है हमने। आपको आपके कंपनी वाले को पहले ही बताया था, जब हम लोग को करना होगा ना तो हम खुद ही अप्रोच करेंगे। Alright guys, so this is it for the day. So we're ending the day with around 20,000 profit, and I'm carrying this forward. I've taken the 700 points range of the strangle, sorry, and this is into quite comfortable range. So we should be getting some amount of overnight decay, as I can expect. So yeah, let's see how it happens. I hope you like the video. Do comment, subscribe, and let me know what other contents do you like and would like me to include into this. So have a great day. Bye bye. Take care.